Rahul, how much time? Good afternoon, viewers. I am Gagan Nagpal. Today I am again back in action for you. And viewers, today with me, Dr. Ruby Sehra. She is the known gynecologist with us. She is having around 40 years of experience in treating successfully the women's health problem. Today she is with us and we are having many questions on the very hot topic for the women, that what they have to do during pregnancy when they have the corona or in the corona time, how they have to take care of themselves. So viewers, welcome Dr. Ruby Sera. She is the senior gynecologist with us in Shri Balaji Action Medical Institute. Welcome ma'am with us today. Thank you, Gagan. Thank you for inviting me for an important talk, which is related to pregnant women. We all know that we are just undergoing, this pandemic is on, and the second wave has already started of the COVID-19 infection. Yes, This ma'am. is That is this. why today we have invited you to understand that we all know now the what is corona, but still we want to know from your words and what is corona and how does this affect in the pregnancy. We want to know from you, ma'am. See, this pandemic has started from December 2019, and Yes. since then it is increasing day by day, and it has involved globally all the countries, and many of the mortalities, many of the deaths have also occurred because it is so highly infectious, and everybody, all people are interacting this corona, and all people are suffering from this corona disease. This is corona and COVID-19 is caused by a virus, which is a flu-like causing pneumonia-like symptoms. And first of all, there are 7 kinds of SARS viruses, 4 of which are not very virulent, but 3 of them are virulent. And in 2003, SARS, there was a pandemic of severely acute respiratory distress syndrome, which continued for 2 years, and then it affected the Middle East also. Then in 2019, this virus has again come up. This virus has normally, this is a acute respiratory distress, causes pneumonia-like symptoms, and it causes flu-like symptoms where when and moreover, it is genetically like SARS virus, which affected, which caused a pandemic in 2003, but it is 96% genetically related to this pneumonia-like syndrome, which causes pneumonia-like symptoms in bats. So this is a virus which started from the bats in China, and it was named as Wuhan virus, and later WHO named it as a COVID-19 virus. And it has affected almost all the countries globally, and it is causing so many casualties. And moreover, we being a obstetrician, practicing obstetrician, we are also, our pregnant women are also suffering from this. And pregnant women, if they interact this COVID-19, it is going to be highly, it can cause many of the complications, although 82% patients, 90% patients, they recover if they interact COVID-19. But only it has been studied that 12,080 women interacted COVID-19 during pregnancy, out of which 8% had requirement of oxygen and other measures, but 4% had requirement of ventilation and intubation, and 0.3% of the women, we had a mortality of these women. So in order to reduce this mortality, we have to take some measures so that pregnant women, they interact. We have to take some steps. We have to make all the pregnant women or trying to be pregnant women the awareness about this COVID-19 infection. How can we protect ourselves? Or if we have COVID-19 infection, how should we, what measures should we take, and how should we treat ourselves so that there is minimum of the mortality? Hello.
हेलो, हेलो, कहाँ पे? आवाज नहीं आ रही। Hear me? I can't hear you. I can't hear you. अब आ रही है मैम? हाँ, now I can hear. मैम हमसे Yes. कई लोग आज यही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें अपनी कोविड से कैसे बचाव करना चाहिए। तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी। एक एक करके हम क्वेश्चन आपसे लेंगे। अभी एक पेशेंट है जो कि दिल्ली से हैं, सीमा, वो हमसे ये पूछ रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कोविड से बचने के लिए। एज वी नो, सबको एक सोशल डिस्टेंसिंग इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो आपको होना कोविड 19 से आपको बचाने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना लॉज को फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करनी चाहिए। बाकी स्टे एट होम। फॉर प्रेग्नेंट लेडीज इट इज अ बिग नो टू गो आउटसाइड एंड टू हैव फूड फ्रॉम आउटसाइड। एंड इट इज इफ यू अगर आपको जितना हो सके आपकी एंटीनेटल विजिट्स भी कम से कम होनी चाहिए। आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑन कॉल पे जितना ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, कम से कम एंटीनेटल विजिट करेंगे, वो उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी आपको प्रॉपर मास्किंग की भी अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि एक सिंपल मास्क, कपड़े का मास्क आपके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है। इसलिए आजकल दिस म्यूटेंट वायरस विच हैज कम अप इज़ वेरी वेरी इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस। इसके लिए 1 मिनट का कॉन्टैक्ट किसी कोविड पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट होने से यू कैन कैच दिस इन्फेक्शन। सो इसलिए यू मस्ट वेयर N95 मास्क, और अगर हो सके तो 2 मास्क जरूर कीजिए। और अगर आपके घर में कोई किसी को वायरस है या कैरियर हो सकता है, उसलिए उल्टा आपको अपने घर में भी मास्क पहन के ही रहना चाहिए। और आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड आपकी अपनी नॉर्मल हाइजीन अपनी ध्यान रखिए। अपने फोमाइट्स को कोविड-19 से कैच मत होने दीजिए। अगर आप अपना मास्क रखते हैं तो आप सेम मास्क जो है इधर उधर नहीं रखना, उसको अपने हाथ से टच नहीं करना। और साथ में आपको मास्क जो है यू शुड कीप 3 मास्क। जैसे आज आपने एक यूज किया, दूसरा दूसरे दिन, तीसरा तीसरे दिन, उसको आप अखबार न्यूज़पेपर में पैक करके रख सकते हो या धूप में रख सकते हो। और 4th डे पे, क्योंकि इसकी वायरस की लाइफ जो होती है वो 3 दिन होती है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो इसलिए 3rd 4th डे पे आपको 1st डे का मास्क यूज करना चाहिए, फिर 5th डे पे आपको 2nd डे वाला मास्क यूज करना चाहिए। इस तरह से आपको अपने मास्क जो है वो चेंज करते रहने चाहिए। और एक मास्क, अगर आप सपोज अपने साथ एक कपड़े का मास्क पहनती हैं तो उसको अंदर पहना जा सकता है, बाहर N95 पहना जा सकता है, या N95 के साथ एक सर्जिकल मास्क जो कि हर 4-5 घंटे में चेंज करना चाहिए। इस तरह से अपनी मास्क जो है परफेक्ट रखिए। इट शुड बी टाइटली फिटेड एंड शुड नॉट बी योर ब्रेथ शुड नॉट बी गोइंग आउट एंड यू शुड नॉट बी टेकिंग, और दूसरों का इन्फेक्शन भी आप कैच ना करो। तो इस तरह से मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और आपका पर्सनल हाइजीन, सैनिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप जैसे अपने घर पे अपने सैनिटाइजर यूज किया, आप उसी टाइम पे किचन में मत जाइए, बिकॉज देन इट इज इन्फ्लेमेबल दिस सैनिटाइजर। और अगर आप हो सके तो अगर आप घर में किसी को हो जाता है तो उनको आइसोलेट कर दीजिए और आप अपना मास्क अच्छे से पहनिए। तो दीज आर द प्रिकॉशंस व्हिच यू कैन टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैम इम्पोर्टेंट बात व्यूअर्स डॉक्टर साहब ने बताई है कि मास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में कोई इन्फेक्टेड है तो यू शुड नेवर कीप योर मास्क डाउन। आपने अपने मास्क को नीचे नहीं करना है, वही आपकी गाइड है, वही आपका एसेट है, और उसी से ही आपने रहना है। इस एसेट को लूज नहीं करना है और हमेशा मास्किंग रखनी है और हैंड वॉश करना है। मैम हमसे ऐसा मास्क ही को एक टच क्वेश्चन। करके, हाँ, मास्क को टच करके अपने फेस पे कहीं भी अपने हाथ मत लगाइए, बिकॉज देन यू बिल्कुल, कैन कैरी द इन्फेक्शन। क्योंकि मास्क के बाहर हो सकता है कि वायरस ने वायरस रुका हुआ हो, आपको मास्क से प्रोटेक्शन मिली हो, वो इन्फेक्टेड जोन है, तो उसको आप आपने ये नहीं कि हाथ से लगाकर और फिर उसे कहीं पर आप छू रहे हैं। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको नहीं करना है। मैम हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैक्सीनेशन पे कि मैम ये कब डिसाइड करना है कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट होना है या नहीं होना। ये बहुत मैम हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट
breastfeeding women में vaccination has not been advised and there are no guidelines actually, ना रॉयल कॉलेज की है, ना अमेरिकन कॉलेज की है, ना FDA की है, किसी की गाइडलाइंस नहीं बनी है कि आपको ये वैक्सीन लेनी है प्रेग्नेंट वुमेन को या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को। बट ऑल द डेटा, जैसे अमेरिका में इतने 60 मिलियन वैक्सीन हो चुकी हैं, उसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन ने लिया वैक्सीन लिया, अभी तक कोई सेफ्टी इश्यूज नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से जो सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है या और अभी तक जो डेटा मिला है, ऑल तो कोई ट्रायल्स नहीं रन किए गए हैं, बट जो डेटा मिला है इट इज फाउंड टू बी very safe during pregnancy, and in probably in near future everybody will be all pregnant will be offered for vaccine, and moreover vaccine decide करना जो है, वैक्सीन अभी कुछ देशों में जैसे चिली में ऑल प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन दी जा रही है, और इस वैक्सीन के हमें खुद ही अपने ही रिस्क और बेनिफिट्स अपने आप डिसाइड करने हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को जिनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, इन लोगों ने जिन्होंने दोज हु आर प्रेग्नेंट, दे शुड आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर देम टू टेक द वैक्सीनेशन बिकॉज दे विल बी प्रोटेक्टेड। बिकॉज आपको मालूम है कि ये अगर प्रेगनेंसी में आप कोविड इंटरेक्ट कर लेते हैं, द चांसेस ऑफ having this ICU admissions, ventilation, and other things are more in pregnant women. So although most of the women recover, but इनमें ज़्यादा होता है। और अगर आप इस तरह से हेल्थ वर्कर हैं और इस तरह से आप मेडिकल केयर में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो आपको ये कैरी करने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको इन सच केसेस आपको अपना खुद डिसाइड करना है कि आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं कि नहीं। बट फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू देर आर नो साइड इफेक्ट्स जो कि डायग्नोज किए गए हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ साइड इफेक्ट होता है, ना बेबी पे ना मदर पे। और अगर आप इस तरह से, अगर आपको कोई हाई रिस्क डिजीज है, जैसे आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन यू आर मोर वल्नरेबल टू कैरी दिस infection, and moreover the complication rate will also be higher. As such pregnancy पे कोविड का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, although some reports have some data has come up with कि प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, इससे रिलेटेड पेशेंट जब प्रीमेच्योरिटी होती है तो ऑब्वियसली नियोनेटल डेथ्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए बेबी पे यही इफेक्ट है कि प्रीमेच्योरिटी होगा, तो इसलिए बेबी पे कोविड-19 के इफेक्ट से नियोनेटल डेथ्स होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। बट अगर आप हेल्थ वर्कर हैं और अगर आप ऐसी क्राउडेड कंडीशंस में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जिसमें आपको कोविड-19 कैरी करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आई वुड एडवाइज, तो आई नॉट मी, देन you should weigh the benefits and the risks of the vaccination and you should decide yourself to whether you have to take it or not. ग्रेट मैम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है वैक्सीनेशन के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को कि उन्हें लेना चाहिए या नहीं। इसमें अभी कई चीजें आनी बाकी हैं, लेकिन सेफ्टी इज द बेस्ट थिंग। अपने मास्क और अपने सैनिटाइजेशन को नहीं भूलें, वही इसमें आपके गोल्डन रूल्स हैं। मैम, हमसे इसी चीज पर ही एक नीलिमा जी पूछ रही हैं कि विच आर द वैक्सीनेशन शुड बी टेकन इन द प्रेगनेंसी। तो मैम, ये बड़े डिफिकल्ट और बड़े टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम हमारे पास। वैक्सीनेशन एज सच आप जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, दे आर नॉट लाइव वैक्सीन्स एंड दे आर एटीन्यूएटेड एंड वेक्टर कैरियड वैक्सीन्स, और इससे कोई प्रेगनेंसी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और अभी तक जो अवेलेबल वैक्सीन है वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और आने वाले समय में स्पुतनिक और बहुत सारी 8 और वैक्सीन हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज करी हैं, विच विल बी अवेलेबल इन नियर फ्यूचर टू द होल पॉपुलेशन। बट एज सच इनमें से कोई भी वैक्सीन ऐसी लाइव नहीं है, तो इसलिए जो आपके यहाँ अवेलेबल है उसको लगाएं। हाँ, नहीं, इसलिए ये कहना कि कौन सी अच्छी है कौन सी सेफ है अभी Yes. बहुत डिफिकल्ट है। और जो आपके एरिया में अवेलेबल है वैक्सीन, इनमें से वो आप ले सकते हैं, बट वो आप ले सकते हैं। और आई थिंक चॉइस आपके पास अभी नहीं है, आने वाले टाइम में आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लेटर यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन। अभी तक आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जो आपको मिलेगी वही लगानी पड़ेगी। बट जैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट
clinics या hospitals procure कर लेते हैं ये vaccine को, then probably you will have a choice and then you can think, you can go to social media, बाकी हेल्पलाइन अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करके जैसे ही आपको लगाने के लिए मौका आएगा आप उनसे डिस्कस करके आप अपना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं. बट राइट नाउ एज सच कोई प्रेफरेबल वैक्सीन नहीं दी गई है जो कि प्रेगनेंसी में 100% सेफ हो. एंड मोर ओवर व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी वैक्सीन ऐसे नहीं रिलीज की हुई है. दे हैव गॉन थ्रू अंडर वेरियस ट्रायल्स. सो आप उस चीज को नहीं सोचे कि कौन सी लगानी है, क्या लगानी है. मार्केट में जो भी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है, दैट इज कम आफ्टर द वेरियस ट्रायल्स. एम आई करेक्ट मैम? No, as such, no trials have been done on pregnant women. It is only Okay. the self-reported data from America, from UK, where they have been given vaccination. और इस तरह से जो रिपोर्ट हुई हैं, जो प्रेगनेंसी जिन्होंने लगाई उनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए, प्रेग्नेंट वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बेबी जो डिलीवर हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इसलिए देयर वाज द बेस्ट रॉबस्ट एक ट्रायल तो नहीं कह सकते, जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो रिपोर्टेड डेटा है वो 90,000 pregnant women have been given vaccination in America, and out of which no risk or no harm has been found to be there in the pregnant women as such, and babies have also not been affected by this. Great, ऐसे कोई reported how data the pregnant women get registered themselves for the vaccination? We are getting the questions, ma'am, ki how we can register. I am 23 years old and I am pregnant, then how can I register myself for the vaccination? वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने अभी कुछ साइट्स खोल दी हैं, जैसे आरोग्य सेतु है, एक वेबसाइट है www.cowin.government.in. इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं. आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, आपको OTP आएगा, उसमें आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं और फिर वो इसी के हिसाब से आप अपने जो आपके एरिया के नज़दीक आपके सेंटर्स हैं उनमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और आप तब तक अपना माइंड मेकअप करके आप इसमें अपने आप को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं. And Mrs. Rajni है द्वारिका से. She is want to know her daughter is 27 years old and she is having pregnancy. So does she has to go for the for test before going to any vaccine, before going to vaccination? She is asking, ma'am, does she has to go for any test like ultrasound and RT-PCR before going for the vaccination? I think, ma'am, as such, no test. Yes, no test is recommended before going for a vaccination, but I would prefer that if you just get your ultrasound done, which is due, not specially for this, which is due. Suppose you are at 13 weeks, NBNT scan is recommended, then you should get that and then go for a vaccination after 13 weeks. And if you are due for a level 2 ultrasound, you are due for a color Doppler, then you can get your scanning done and then you should go for a vaccination. That is your own choice, but as such, government is not asking for any test before taking any vaccination. Neither RT-PCR is required nor any other blood tests are required to go for a vaccination. Ma'am, we have been asked for that. Is there any schedule for the vaccination and from where they have to get the vaccination done, ma'am? I mean, एज सच कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन जो अभी तक अवेलेबल हैं, इनका शेड्यूल है कि फर्स्ट डोज आपको लगेगी जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट आती है, उसके 4 वीक्स के बाद आप सेकंड डोज लगवाएं और प्रेफरेबली वही वैक्सीन यूज़ करें जो आपको फर्स्ट टाइम पे जिसकी डोज लगी है, और इंटरचेंज करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है. और अपना मैक्सिमम जो है आप 12 वीक्स तक पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी सेकंड डोज. Okay. So I think, ma'am, viewers are getting the answers from the doctor, and very precisely, Dr. Ruby is saying that for the precaution, you have to take care of the mask. For the vaccination, you have to go with near of your vaccination centers. So the things are available very near to you. Government is making the centers available near to your home. Probably in the other states where the lot many problems of the terrain, there could be the different thing, but you should go for the nearby vaccination center. Am I correct, ma'am? Yes, you are very correct, because जो आपके आसपास सेंटर है उसमें ही जाना. वैसे भी आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है और जितना कम ट्रेवल प्रेगनेंसी वुमेन करेंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा.
Ma'am, Miss or Archana from Raja Garden, ma'am, she is asking that what is the best time she should take the vaccine? She is having the 5 months of pregnancy. So it is the right time to do it. In fact, ma'am, I can add one more thing that when a pregnant female should get the vaccination, what is the best time to have the vaccination? see, since as I told you, I am telling you again and again that there is no fixed schedule for a pregnant woman, but the pregnancy, this vaccination should be avoided during the first 3 months of pregnancy. Rest of the time, yani after 13 weeks, you can get your all kind of vaccination, but the safest time is as it is this thing recommended for other vaccine like flu and Tdap जो vaccine है इनको safely 26 weeks to 32 weeks पर recommend किया जाता है तो from but as such अभी कोई प्रेफरेबल टाइम नहीं है जैसे ही आप बस 13 वीक्स तक तो आपको अवॉइड करना चाहिए उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं और अगर आप सपोज आपका फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी जैसे आपने एक फर्स्ट डोज लगवा ली और उसके बाद आप प्रेगनेंसी आपकी डिटेक्ट हो गई तो इसमें अब आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी ये वैक्सीन मेरे बेबी को प्रॉब्लम तो नहीं करेगी उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में उसके ऑर्गेनोजेनेसिस में या उसकी फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं ले आएगी ये बहुत आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे एक मेरे पास पेशेंट भी आए जिन्होंने ये पूछा कि मेरे हाँ शी इज अ हेल्थ वर्कर शी इज जस्ट 23 शी इज अ हेल्थ वर्कर सो शी गॉट वैक्सीनेशन डन बट शी बिकेम प्रेग्नेंट सो नाउ शी इज इन डिलेमा व्हाट टू डू वेदर शी शुड continue she should take the second dose she should go for MTP or she should get MTP done also और या फिर उसको अपनी second dose भी postpone कर देनी चाहिए तो इसका as such vaccination जिसको एक dose मिली है they can postpone to 13 weeks or they can reschedule it but as such no guidelines are there that this vaccine is going to harm your baby and you should get an MTP done but you can postpone your मैम हमारा इसी चीज पर ही है मैम हमसे सरबजीत जी पूछ रही हैं जम्मू से कि इस वैक्सीनेशन से मैम कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं इस वैक्सीनेशन से एज सच सबको ही थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपकी और इसमें जो इम्यूनिटी के डेवलप होने के जो रिएक्शंस होते हैं किसी को जहाँ पे इंजेक्शन साइट है वहाँ पे इचिंग रेडनेस थोड़ी सी टेंडरनेस आर्म में हो सकती है बाकी बहुत ही कम लोगों को और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बहुत कम लोगों को ने रिपोर्ट किया है और इससे माइल्जिया मतलब बॉडी एक हो सकती हैं हेडेक थोड़ी सी स्वेटिंग थोड़ा सा फीवर और इस तरह के थोड़े से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बट एज सच नथिंग हैज बीन फाउंड टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल एज सच दे कैन बी मैनेज्ड इफ यू स्टे देयर इन द हॉस्पिटल और जहाँ पे आप वैक्सीनेशन सेंटर में आधे घंटे के लिए रुकते हैं तो द हॉस्पिटल टेक्स गुड केयर बट अगर आपको फीवर या माइल्जिया आते हैं तो एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल कैन बी टेकन सेफली that will not cause any harm and as such कोई इसके और साइड इफेक्ट्स तो रिपोर्ट नहीं हुए देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स दैट दे आर सेइंग दैट दे आर मोर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट्स एंड यू टेक कोविशील्ड लेते हैं तो उससे ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं बट एज सच इट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस आल्सो एंड इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड दैट दिस इज द वैक्सीन दिस इज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन Then there are other vaccinations for the other purposes for the in the pregnancy. So, what are the effects of the other vaccination during pregnancy, ma'am? It has been recommended कि influenza like जो आपके syndrome होता है during pregnancy that can also be harmful. So आजकल Boostrix या injection influenza vaccine जो है normally 28 weeks पे दी जा रही है 28 to 30 weeks की हर woman को दी जा रही है और दूसरा ही इसी तरह से diphtheria and tetanus toxoid and pertussis DTaP vaccine जिसको कहते हैं उसको वो भी दी जा रही है बट अगर आप जैसे कोरोना वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो इन वैक्सीन से थोड़ा सा 14 डेज रुक कर ही आप ये इसको वैक्सीन लगवाइए अगर आपने ड्यू किया है आपने स्केड्यूल किया हुआ है इनमें से कोई भी वैक्सीन तो अगर आप ये कोविड-19 वैक्सीन लगवाते हैं तो 14 डेज के बाद ही ये वाली वैक्सीन लेनी चाहिए आपको so there should be a spacing of at least 14 days between the two types of Ma'am, we have many questions coming, ma'am. Mr. Rohit Ahuja, he is asking, can breastfeeding mom get vaccination? I think this is a very valid question, ma'am. Yes, Very important.
Yes, breastfeeding women can also go for vaccination safely, and as such आपके breast जगह अगर आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की भी जरूरत नहीं है। और पर ये जो है आपकी जो एंटीबॉडीज, सपोज आपने वैक्सीन लगाई है तो आपके एंटीबॉडीज जो हैं दे विल नॉट protect the baby because they are digested in the stomach and intestine. So it is protective for you, but not for the baby. But you can definitely breastfeed your child, and you can take this thing vaccination during breastfeeding. Okay. And if a woman is near the term, what should she do during this time? And since nowadays the most of the hospitals are taking care and managing corona, so how the woman who is near to the term, she can be managed? Yes, because this second wave of corona is very aggressive, and virus has become very virulent because of the mutations. Most of the people, I mean, this infectivity rate is very high, which is around 32%. And now we know that in Delhi, in all over India, there is a shortage of the beds and there is a shortage of oxygen. So most of the hospitals, they are refusing to take, if you are positive, then corona positive patients, they are all trying to avoid the admissions for the pregnant women also. But I think आप अपनी अगर आपका नियर टर्म है, 38 वीक कंप्लीट हो चुके हैं आपके, तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर बात करिए और अपना डिलीवरी का टाइम, अपना डिलीवरी जो है रजिस्टर कराइए हॉस्पिटल में। और आपकी जो प्रोटोकॉल है आपके हॉस्पिटल की जहाँ आपको डिलीवर कराना है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या प्रोटोकॉल है, कहाँ पे जाके एडमिट होना है और कहाँ नहीं, और आपको कौन अटेंड करेगा। दिस एवरीथिंग हैज़ टू बी प्री डिसाइडेड because it is there is a scarcity of the beds and the oxygen. So आप अपने जो आपकी कंसल्टेंट प्रैक्टिशनर ऑब्स्टेट्रिशियन है, आप उनसे इस बारे में पहले ही डिस्कस करके रखें। और थोड़ा सा जिस तरह से आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा एडवांस में अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म कर दें, so that everybody, the consultant as well as the hospital, can be ready for your this thing delivery. थैंक यू मैम, आज आपने हमें बहुत अच्छे से मैम तीनों स्टेप्स के बारे में बताया, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पर और प्रेगनेंसी के बाद भी कैसे अपने आप को इस कोविड टाइम पे ध्यान रखना है। और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी आपने घबराना नहीं है, आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं और अपना ध्यान रखना है। मैम आज आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स के इन क्वेश्चंस को लिया और उनको एक एक चीज समझाई अपने सबसे बिजी टाइम पे। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग अस and thanks a lot, ma'am. Next time again we will request you to guide us on the different matter. Hopefully corona will go away. कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है व्यूअर्स, तो इसलिए हमने अपना हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। एंड वी आर ऑलवेज विद यू। डॉक्टर रूबी सेहरा इज अवेलेबल on every Wednesday and Saturday 11 to 1 at Shri Balaji Action Medical Institute. If you still have any more questions, you can send it on us on our inbox and we will certainly reply you with the relevant answer. Thank you, ma'am. Thank you for joining us. Thank you, Gagan. But I would again reinforce that if you are made vaccination available during pregnancy, do not risk. You have to weigh the risks and benefit according to your own family and your own health, and then you have to decide whether you want to take the vaccination or not as such, and you can take help of your practitioner. For me, for my patient, I would definitely advise, if that is available, one must during pregnancy go for vaccination. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot for joining us, ma'am. Thank you, Karan. Thank you so much.